Hello, students. Once again, welcome to the subject verb agreement class. We have seen different rules, how we have supposed to use a verb according to the subject. आज हम और रूल्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे हमारा वर्ब सेलेक्ट करेंगे. So today's rule is जब भी हम कंपनीज के बुक्स के ब्रांड नेम्स की बात करते हैं उसे हमेशा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है. I repeat, the title of books, companies, brand names are always singular. उनके स्पेलिंग में अगर इवन एस आपको शो हो रहा है बट इट इज़ अ नेम, तो उसे आप हमेशा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, Great Expectations is my favorite novel. यहाँ पे एक verb is यूज़ हो रहा है और उसके पहले word है expectations which has s, लेकिन ये plural form में नहीं है. It is in singular form. So Great Expectation एक book का नाम है, एक novel का title है. So उसे हम as a singular subject treat करेंगे. So Great Expectation is my favorite novel. हम are use नहीं करेंगे. Another example can be The Untouchables was a very violent movie. अब Untouchables ऐसे अगेन स्पेलिंग में, लेकिन it is the name of a movie. So Untouchables was a very violent movie. So जब भी हम बुक्स का नाम, टाइटल है, ब्रांड नेम है, किसी भी फर्म का नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, so it is always singular. Let's see to the next rule. Some nouns are always used in singular. Number. For example, poetry, scenery, machinery, stationery, knowledge, information, furniture, money. जब भी हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं they are always considered as singular. इन्हें कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे. For example, Kashmir is famous for its colorful scenery. यहाँ पे ये वर्ड सिंगुलर है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे. इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट. हम ऐसा नहीं कहते नॉलेज आर इम्पोर्टेंट. हम कितना भी नॉलेज की बात करें, इट इज़ ऑलवेज नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट. सो ये सारे शब्द हमेशा सिंगुलर रहते हैं. सो इनके साथ जब भी आप वर्ब यूज़ करेंगे इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. नेक्स्ट रूल सेज दैट सम ऑफ द नाउन्स में अपीयर प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर. बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, इन सब के स्पेलिंग में एस आता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द स्पेलिंग कि इसके लास्ट अल्फ़ाबेट एस है, सो दे आर प्लूरल. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स इज़ नॉट एन ईजी गेम. हम पॉलिटिक्स के साथ कभी आर यूज़ नहीं करते हैं. Politics is always singular, so politics is not an easy game. The news is correct. अब न्यूज़ अगेन न्यू एस, चाहे बहुत सारी न्यूज़ हो या न्यूज़ सिंगल न्यूज़ हो, हम हमेशा न्यूज़ ही यूज़ करेंगे. So it is always singular. The news is correct. Next is some nouns ending in x take singular verb when they refer to a principle or system or a field of study. But when they refer to an individual practice, they are usually plural. For example, the word economics. अब economics ऐसा word है जो एक subject भी है, and जब हम कहते हैं economics, we talk about the numbers. For example, economics is an interesting subject. यहाँ पे एज अ फील्ड ऑफ स्टडी हम यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ सिंगुलर.
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सो इट इज सिंगुलर. The next is the economics of your projects are all wrong. That means the calculations. आपने जो भी economics is your calculations, the study आप practically जो करने वाले हैं related to that project, that is all wrong. So it is related to the individual practice. So यहाँ पे ये word plural हो जाएगा. Similarly, ethics is being taught in the spring. So यहाँ पे हम ethics की बात करेंगे. So it is again singular. So according to the use, same word can be plural, same word can be singular. So according to the use, we will be using it. Next rule says when adjective of quantity like much, more, little, less are used, they take a singular verb. Adjective of quantity, ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, उसे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लिटिल हैज़ बीन डन सो फार. लिटिल यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा काम हुआ है. सो क्वांटिटी हम बता रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो लिटिल हैज़ बीन डन सो फार. Next example can be lots is still needed. Lots, again it is an adjective of quantity. So lots is still needed. हम इसे singular की तरह treat करेंगे, though it has an s. Much less was expected. अब we have two things कि हम much कह रहे हैं, less, तो quantity की हम बात कर रहे हैं, but again it is a singular subject. So much less was expected. Next is some words ending in s, spelling में last में s आता हो, are always singular, but verb is always plural. For example, spectacles, trousers. ये जब हम बात करते हैं, are always singular. Where is my trouser? So when you say trousers, it always has an s, लेकिन हम particular एक ही पीस की बात कर रहे हैं. For example, his trousers are dirty. We won't say his trousers is dirty. हम हमेशा उसे plural form में ही use करते हैं. His trousers are dirty. Next example can be, what are your monthly earnings? Earnings again हम s के साथ ही use करते हैं. But the verb is what are your, not what is your monthly earnings. Next rule is, if a compound word is formed by joining a definite numeral adjective and a noun by a hyphen, the noun so used will always be singular. Compound word किससे बना होगा? एक definite numeral and an adjective, दोनों के combination से अगर जो words बने हैं and they are using a hyphen, so ऐसे hyphen is dash. So ऐसे words को हम हमेशा singular form में treat करेंगे. For example, here is a 5 rupee note. 5 is a numeral adjective and rupee. कैसा rupee? 5 rupee, isn't it? So you are using a compound word 5 hyphen rupee. So इस तरह के words जहाँ पर भी use होंगे, it is always considered as a singular subject. So if a compound word is formed by joining a definite numeral adjective and a noun by a hyphen, the nouns so used will always be singular. For example, here is a 5 rupee note. Now it is 5, but it is one note. So here is a 5 rupee note. This is included in our 5-year plan. Again 5-year. So it is a compound word. We will be treating it as a singular subject. So this is included in a 5-year plan. So again it is a singular subject. So इस तरह के words पे आप हमेशा focus करेंगे. So these were the some rules related
to the subject verb agreement. If you have any doubt, you can ask.